Welcome, dear students. Our today's topic is forced damped harmonic oscillator. Forced को हम driven भी कहते हैं. So we can say our today's topic is driven damped harmonic oscillator. सबसे पहले हमने एक हार्मोनिक ऑसिलेटर स्टडी किया जो कि अनडैम्प्ड था, तो उस पे सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करता था एंड दैट वाज द रेस्टोरिंग फोर्स. उसके बाद हमने डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर स्टडी किया, तो विच इज द रियल केस कि इन एक्चुअल प्रैक्टिस हार्मोनिक ऑसिलेटर में रेस्टोरिंग फोर्स के साथ साथ एक ऐसा फोर्स भी होता है which is frictional, which is dissipative, जो कि इस हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी को ग्रेजुअली ड्रेन आउट करता है. तो एज अ रिजल्ट हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो एम्पलीट्यूड है दैट कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस. तो ये जो हर साइकिल में डिसिपेटिव फोर्स इस हार्मोनिक ऑसिलेटर से एनर्जी ड्रेन आउट करता है, उस एनर्जी को कंपेंसेट करने के लिए वी यूज एन एक्सटर्नल एजेंसी जो इस हार्मोनिक ऑसिलेटर को उतनी एनर्जी पीरियोडिकली सप्लाई करता है. सो जो एक्सटर्नल एजेंसी है दैट कैन बी अ फोर्स, तो दैट कैन बी द ड्राइविंग एजेंसी, सो दैट compensates for the energy which is being taken out by the damping force in each oscillation. तो इसमें हम we shall see what is the differential equation of a forced or driven damped harmonic oscillator. फिर हम इसका solution देखेंगे. We shall talk about the special case, the resonance. फिर हम इसकी कुछ applications भी देखेंगे. रेजोनेंस के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, क्वालिटी फैक्टर और सिंपल क्वालिटी, वी डिनोट इट विद Q. तो ये क्या है हम ये भी देखेंगे. एंड एज एन एग्जांपल ऑफ a driven damped harmonic oscillator we shall talk about tuning LCR circuit, and finally we will also talk about tuned mass damper. So let us start. Driven damped harmonic oscillation क्या है? It is the way of maintaining the amplitude of a damped oscillator. एक oscillator जिसमें damping force present है, जिसकी वजह से इसका amplitude exponentially decrease होता, लेकिन उस एम्पलीट्यूड को मेंटेन करने के लिए, उस एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रखने के लिए हम इस डैम्प्ड सिस्टम में कंटिन्यूअसली एनर्जी में को फीड करते हैं इन सच अ मैनर टू ऑफसेट द फ्रिक्शनल लॉसेस, कि जितनी एनर्जी हर साइकिल में लॉस होती है उतनी एनर्जी एक्सटर्नल एजेंसी इस डैम्प्ड ऑसिलेटर को सप्लाई करती है, ताकि जो इसका एम्पलीट्यूड है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज ना हो, बल्कि वो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहे. तो ऐसी ऑसिलेशंस को हम ड्रिवन डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस कहते हैं. तो a steady oscillation of this type is called driven damped harmonic oscillation, जिसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है. Forced oscillations. Oscillations produced by an external periodic driving force. और जो external periodic driving force है, ये जरूरी नहीं है कि जिस फ्रीक्वेंसी पे हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑसिलेट करना चाहे, यानी जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, इट इज नॉट नेसेसरी कि जो एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी इसके बराबर हो, जरूरी नहीं है. The frequency of external driving force can be less than the natural frequency, can be equal to natural frequency, can be greater than natural frequency of the oscillator. तो यहाँ पर हम दो फ्रीक्वेंसीज डिफाइन करेंगे. वन, इट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जिसको हम ओमेगा नॉट से डिनोट करेंगे. इट इज द फ्रीक्वेंसी
at which the oscillating system would oscillate अगर सिस्टम में न तो ड्राइविंग फोर्स होता और न डैम्पिंग फोर्स होता, यानी दिस इज द केस ऑफ अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस. नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी जिस पे हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑसिलेट करता अगर न तो डैम्पिंग फोर्स होता और न ड्राइविंग फोर्स होता. Another frequency is the drive frequency. इसको हम ओमेगा with a subscript d इससे डिनोट करते हैं. This is the frequency of the driving force. कि जो एक्सटर्नल एजेंसी है जो इस हार्मोनिक ऑसिलेटर को पीरियोडिकली एनर्जी सप्लाई करती है, वो किस फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जी सप्लाई करती है, उस फ्रीक्वेंसी को हम ड्राइव फ्रीक्वेंसी कहते हैं. तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम फॉर a driven harmonic oscillator. Broadly, it consists of two parts. Number one, the external driving agency, and this is the external driving agency. This is a rotating disc with angular frequency omega d. तो ये rotate करती है, तो इससे ये spring भी continuously forcibly oscillate होता है. और जो बाकी है, that is the driven system. This whole thing इस rotating disc के बगैर जो कुछ है, that is the driven system. तो the driven system is generally a damped oscillator or driving agency. It is a source of mechanical force in the case of a mechanical system. मैकेनिकल सिस्टम में एनर्जी डिसिपेट होती है, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए वी यूज अ सोर्स ऑफ मैकेनिकल फोर्स. और अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जिसमें डैम्प्ड ऑसिलेशंस हो रही हैं, तो एनर्जी लॉस हो रही है, तो वहां पे हमने एनर्जी सप्लाई करनी है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो वहां पर जो ड्राइविंग एजेंसी है, दैट विल बी अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. सो ड्राइविंग फोर्स का काम क्या है? इट पुट्स एनर्जी इनटू द सिस्टम एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी. तो जरा हम देखें कि कौन कौन से फोर्सेस हैं जो एक्ट होते हैं इस ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर पे. एक तो इसमें स्प्रिंग है, तो देयर विल बी स्प्रिंग फोर्स विच इज द रेस्टोरिंग फोर्स. और हमने इस स्प्रिंग के साथ बॉटम पे एक बॉडी अटैच की है विच हैज मास m. तो जब स्प्रिंग ऑसिलेट करेगा, द मास विल मूव इन दिस विस्कस फ्लूइड, सो देयर विल बी आल्सो द डैम्पिंग फोर्स because of this viscous fluid. And number 3, there is the external driving agency which has a disc rotating at some frequency omega d. So it will be applying its driving force. So that means there are 3 forces acting on the driven harmonic oscillator. This spring force gives the restoring force. So number 1 is the restoring force, and this equals minus k times x. K, it is the spring constant or force constant of the spring, and x is the displacement of the body m from its mean position. Number 2 force that is acting here is the damping force Fd, and this equals minus b times v, equals minus b times dx by dt. Here b, it is the damping coefficient, and v is velocity of the body m. और velocity इसको हम लिख सकते हैं as the first differential coefficient of displacement. And the third force जो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, that is the periodic driving force. तो since it is periodic, तो इसको हम लिखेंगे F is equal to
f naught, which will be its maximum value, times sine of omega d times t. Omega d is the drive frequency. It is the frequency at which the energy is put into system by this driving force. F naught will be its maximum value. Since the driving force applied is periodic, तो इसको हम as a sinusoidal function दिखा रहे हैं. So the net force will be sum of the three forces: driving force plus damping force plus restoring force. तो हम इनके values यहाँ substitute करेंगे. We will get F naught sine of omega d into t. This is the driving force. Then minus b times dx by dt. This is the damping force. Then minus k times x. This is the restoring force. So this is the net force on the oscillating body M. Let us apply Newton's second law, that mass times acceleration equals net force on the body. So mass into acceleration, which is second differential coefficient of displacement with respect to time, is equal to net force, that is F naught sine of omega d into t, then minus dx by dt, then minus k times x. हम इसमें थोड़ी सी अरेंजमेंट करेंगे. राइट हैंड साइड पे जो दो नेगेटिव टर्म्स हैं, इनको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो इनके साइंस पॉजिटिव बनेंगे. तो वी विल गेट m टाइम्स d स्क्वायर x by dt स्क्वायर प्लस b टाइम्स dx by dt प्लस k टाइम्स x इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे 0 होता then it will be the case of damped harmonic oscillator, लेकिन यहाँ पे एक फोर्स अब और ऐड हो गया है, and that is the driving force. So right hand side पे फिर बचता है f naught sin omega d times t. I will call this equation number 1. And equation 1 is the differential equation of a driven damped harmonic oscillator. तो इसको सॉल्व करना है, इसको दो बार इंटीग्रेट करना है. हम वो यहाँ पे नहीं करेंगे. We will directly write its solution. So its solution is the displacement is given by amplitude, जिसको हम यहाँ पे कैपिटल B से डिनोट करेंगे, साइन ऑफ ओमेगा d टाइम्स t प्लस a phase constant phi. So here B, it is the amplitude of the driven oscillations, and phi, it is some phase constant. The amplitude is given by the ratio of f naught to square root of m times omega d square minus omega naught square whole square plus b square omega d square. So f naught, it is a constant. Similarly, जो इसमें ओमेगा नॉट है, that is also constant, the natural frequency. तो इसमें वेरिएबल है, एक साइड में वेरिएबल है ये एम्पलीट्यूड और दूसरे में वेरिएबल है
the drive frequency. तो अगर हम ओमेगा डी, we will keep this equal to exactly ओमेगा नॉट. तो आप देखेंगे कि ओमेगा डी को हम एग्जैक्टली ओमेगा नॉट के बराबर रखेंगे, तो ये टर्म जो है दिस विल फिनिश. अगर हम ओमेगा डी ग्रेटर देन ओमेगा नॉट रखेंगे तब भी इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, बिकॉज सबट्रैक्ट होगा लेकिन स्क्वायरिंग होगी. और अगर ओमेगा डी लेस देन ओमेगा नॉट रखेंगे वी विल गेट अ नेगेटिव टर्म इनसाइड, लेकिन उसका भी स्क्वायर है तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा. दैट मीन्स डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ ऐड ही होता है टू बी स्क्वायर ओमेगा डी स्क्वायर. सो फॉर वैल्यूज व्हेन ओमेगा डी इज नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट, तो डिनोमिनेटर का वैल्यू अच्छा खासा होता है, एम्पलीट्यूड का वैल्यू कम मिलेगा. बट एट एग्जैक्टली ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा नॉट, ये जो डिनोमिनेटर में पहली टर्म है ये जीरो बनेगी, तो डिनोमिनेटर में से एक टर्म फिनिश होगी, तो कॉन्सिक्वेंटली जो एम्पलीट्यूड का वैल्यू है दैट विल इंक्रीज. द एम्पलीट्यूड विल हैव मैक्सिमम वैल्यू. नाउ इन एडिशन, अगर डैम्पिंग बी एब्सेंट हो, b also equal to 0, तो सारा का सारा डिनोमिनेटर ही 0 बनेगा and the b will increase even large and it will tend to infinity. So in the absence of damping, the amplitude will have even large values tending to infinity. So this is the expression for amplitude in terms of the force, mass of the oscillating body, the drive frequency omega d, and natural frequency of the oscillator and damping coefficient. तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, along horizontal axis we will plot the drive frequency, along vertical axis we will plot the amplitude b. तो हम देखते हैं कि अगर हम ओमेगा डी का वैल्यू 0 से स्टार्ट करें तो the amplitude increases, and when the drive frequency becomes exactly equal to natural frequency, the amplitude attains maximum value. और उसके बाद जब ड्राइव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ग्रेटर देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, द एम्पलीट्यूड starts to decrease and finally becomes 0 at some particular value. So this point where omega d equals omega naught, यानी कि जो एक्सटर्नल एजेंसी की फ्रीक्वेंसी है दैट एग्जैक्टली इक्वल्स टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, वहां पे हमें एम्पलीट्यूड का वैल्यू मैक्सिमम मिलता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेजोनेंस. तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे द ड्राइव फ्रीक्वेंसी हैज वैल्यूज लेस देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, और इसके राइट हैंड साइड में द ड्राइव फ्रीक्वेंसी हैज वैल्यूज greater than the natural frequency of oscillator. So in both cases, चाहे ड्राइव फ्रीक्वेंसी लेस देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो या ड्राइव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो, तो हमें एम्पलीट्यूड का वैल्यू कम मिलता है, हमें एम्पलीट्यूड का वैल्यू मैक्सिमम मिलता है when drive frequency exactly equals the natural frequency. So for both cases, omega d less than omega naught and omega d greater than omega naught, the amplitude of driven oscillations is smaller. So what is resonance? This is expression for amplitude. तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो एम्पलीट्यूड हो इसका वैल्यू मैक्सिमम हो, तो जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है दिस शुड बी मिनिमम.
तो मिनिमम तब पॉसिबल है जब ये पहली टर्म फिनिश हो जाए, दैट इज दिस फर्स्ट टर्म इक्वल 0. It implies omega d should be equal to omega naught. So this is the condition for amplitude of driven harmonic oscillator to be maximum, and this condition is called the resonance condition. So a periodic force which drives a harmonic oscillator at its natural frequency, जब ड्राइविंग फोर्स की भी वही फ्रीक्वेंसी हो जो ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, देन वी से द ड्राइविंग फोर्स प्रोड्यूसेस रेजोनेंस. सो हम रेजोनेंस को डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द फिनोमेनन ऑफ ड्राइविंग एन ऑसिलेटिंग सिस्टम विद अ फ्रीक्वेंसी व्हिच इज इक्वल टू इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, and a system which is being driven at its natural frequency, एक ऐसा ऑसिलेटिंग सिस्टम जिसपे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो और वो एक्सटर्नल फोर्स इस ऑसिलेटिंग सिस्टम को उसी फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट कराए जिसपे ये सिस्टम खुद करना चाहता है, जो कि इसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है. द सिस्टम इज सेड टू रेजोनेट. तो इस रेजोनेंस की बेहतरीन एग्जांपल है टैकोमा ब्रिज कोलैप्स, जो कि 1940 में हुआ था. दिस ब्रिज वाज इन वॉशिंगटन और तेज हवा चली थी जिसकी वजह से ये ब्रिज ऑसिलेट करने लगा था, और विद टाइम जो विंड है उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रिज. तो कॉन्सिक्वेंटली एम्पलीट्यूड increased tremendously and finally the bridge collapsed. Tacoma Bridge, Washington, opened only a few months ago, was built at a cost of over $6 million. But misfortune overtakes the great structure. These are some of the most amazing pictures ever recorded by a newsreel. The actual collapse of the world's third largest suspension bridge. Only a 35-mile-an-hour wind is blowing, but this apparently sets up a rhythmic swinging of the bridge, which increases with each swing. Finally, the swinging road and the suspension cables give way and plunge into the water below. Fortunately, the only casualties were a car stalled on the bridge and a dog. रेजोनेंस के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं एंड दैट इज क्वालिटी और क्वालिटी फैक्टर. तो हियर वी आर ड्राविंग अ ग्राफ बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइविंग फोर्स दैट इज ओमेगा डी. तो इसमें हम देखते हैं कि एज वी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स, the amplitude increases, becomes maximum, and then again decreases. So we get maximum amplitude when frequency of the driving force matches with the natural frequency of the oscillator. तो इस phenomenon को हम resonance कहते हैं. तो ये resonance जो है ये कितनी sharp है, ये कितनी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे होती है. ये ग्राफ जो इसका पीक है ये कितना नैरो है, तो इसका न्यूमेरिकल मेजर हमें मिलता है विद दिस क्वालिटी फैक्टर. द नैरोनेस ऑफ द ग्राफ or the ability to pick out a certain frequency is known as quality or quality factor of the system. So mathematically we define the quality factor as the ratio of natural frequency. तो न्यूमरेटर में हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी लेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर,
और डिनोमिनेटर में स्प्रेड ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कि यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कितनी डिविएशन चेंज हुई है at half the maximum amplitude. So the maximum amplitude is here. It is half value is here. So it is half value of the maximum value of amplitude. तो इसके corresponding हम एक horizontal line draw करेंगे, तो it will intersect the graph at 2 points. तो जिन 2 पॉइंट्स पे ये ग्राफ को इंटरसेक्ट करे, लेट अस कॉल देम P1 एंड P2. तो हम देखेंगे कि P1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या फ्रीक्वेंसी है, सपोजिंग दैट इज ओमेगा 1, और इसी तरह P2 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी फ्रीक्वेंसी है, लेट अस कॉल दैट ओमेगा 2. सो द स्प्रेड ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसे हम डेल्टा ओमेगा से डिनोट करेंगे, दिस इज दिस मच एंड इज गिवन बाय ओमेगा 2 minus omega 1. So that means the quality factor will be given by the ratio omega naught divided by omega 2 minus omega 1. Omega naught is the natural frequency of the oscillator, and omega 2, omega 1, they are the drive frequencies of the driving force. तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर ये हमें मिलता है ओमेगा नॉट टाइम्स m डिवाइडेड बाय b, और इसमें जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी of the harmonic oscillator है, since we have taken LC circuit, it is given by 1 by under root LC. तो इसमें हम देखते हैं कि जितना डैम्पिंग कोएफिशिएंट का वैल्यू कम होगा, उतना क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू ज्यादा होगा, और जो पीक है वो उतनी ज्यादा नैरो होगी. Let us do a conceptual problem. पहले आप देखें कि how soldiers march. तो आपने देखा कि जो सोल्जर्स हैं ये साइमल्टेनियसली अपना दाहिना पैर ग्राउंड से उठाते हैं, और साइमल्टेनियसली जो दाहिना पैर है वो ग्राउंड के साथ हिट करते हैं. सिमिलरली दिस हैपेंस विद देयर लेफ्ट फीट. तो इससे असर ये पड़ता है कि साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में उनका सारा फोर्स जो है वो ग्राउंड पे अप्लाई होता है with the right feet as well as with the left feet, और ये फोर्स अप्लाई होता है after regular intervals of time. So that means this force is periodic. So we can say that the force applied by soldiers is some maximum value times sine of omega d times t, where this omega d is the angular frequency with which the soldiers hit the ground. The conceptual problem is that soldiers are ordered to route setup, यानी to walk out of setup across a bridge. यानी जब सोल्जर्स ऐसे मार्च करते हैं और रास्ते में कहीं पे एक पुल आए, एक ब्रिज आए, तो सोल्जर्स को कहा जाता है कि वहां पे ऐसे मार्च ना करें, यू ऑल वॉक आउट ऑफ सेटअप. जिस तरह आम लोग, जिस तरह लोग होते हैं, कॉमन पीपल, जिस तरह वो चलते हैं इरेगुलरली, नॉट इन सिंक्रोनाइज्ड मैनर. तो उसका रीजन ये है कि इससे पहले हमने टैकोमा ब्रिज का कोलैप्स देखा कि तेज हवाएं आई, तो हमने देखा कि जो तेज हवाएं हैं उनकी फ्रीक्वेंसी यानी द ड्राइव फ्रीक्वेंसी दैट मैच्ड विद the natural frequency of the bridge. So consequently now bridge started oscillating with a large amplitude. तो उस large amplitude की वजह से ब्रिज में काफी ज्यादा स्ट्रेन पैदा हो गया, और हर किसी स्ट्रक्चर का एक स्ट्रेन लिमिट होता है जिसको वो टॉलरेट कर सकता है.
When that strain limit is exceeded, तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो फर्दर इंटैक्ट नहीं रह सकता, वो कोलैप्स हो जाता है। तो इसी तरह अगर ये सोल्जर्स भी ब्रिज पे इसी तरह मार्च करेंगे तो दे विल अप्लाई a periodic force like this, and if somehow this omega d matched with the natural frequency of the bridge, तो इससे क्या होगा कि bridge will start oscillating with a large amplitude and there is every chance कि वहां पे resonance होगी और bridge collapse हो जाएगा. So this is the reason कि soldiers are ordered to walk out of step across a bridge. कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे हम रेजोनेंस की. एक एप्लीकेशन आप ये देखें कि हमने एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर के सामने एक गिलास टम्बलर रखा है और जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी हम आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेंगे. सो वी विल इंक्रीज ओमेगा डी. And obviously this glass tumbler will have its natural frequency, जिसको हम ओमेगा नॉट से डिनोट करते हैं. So when we will increase omega d, so at a certain instant of time this omega d will match omega naught, so this will give rise to resonance. तो consequently जो गिलास टम्बलर की ऑसिलेशंस हैं उनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा. The amplitude will increase and because of that increased amplitude गिलास में काफी ज्यादा स्ट्रेन पैदा होगा and the glass will not be able to bear that strain and will get finally broken. So let us see. It will be painful to listen because we are increasing frequency. So a glass tumbler gets broken when it is forced to oscillate by an audio frequency generator at natural frequency of the glass. एक और बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है रेजोनेंस की and that is called magnetic resonance imaging, जिसको हम शॉर्ट में MRI भी कहते हैं. तो it gives very clear pictures of internal organs of human body. It's a medical imaging technique. It uses magnetic field and computer generated radio waves to create the detailed images of organs and tissues in human body. क्योंकि हमारी जो बॉडी है it is mostly made of carbon, hydrogen and oxygen. तो MRI में जो हमारी बॉडी में हाइड्रोजन है which are basically protons, they are made to resonate by incoming radio waves जिनकी frequency on the order of 100 megahertz पे रखी जाती है. एक और एप्लीकेशन है कि LCR tuning circuit. हर रेडियो में एक सर्किट होता है जिसे हम ट्यूनर सर्किट कहते हैं. दिस ट्यूनर सर्किट इज बेसिकली LCR सर्किट. तो अगर सिंपल LCR सर्किट ले दैट इज अ डैम्प्ड ऑसिलेटर. लेकिन हर रेडियो में एक एंटीना भी होती है which is used to receive signals from multiple stations. अब जब हम रेडियो को ऑन करेंगे तो उस रीजन में, उस कमरे में, उस जगह पे बहुत सारे रेडियो स्टेशंस की सिग्नल्स हैं. तो हमने एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर स्टेशन की सिग्नल को कैच करना है. सो हाउ टू फिल्टर आउट, यहाँ पे रेजोनेंस यूज होती है. So when we are
ट्यूनिंग द नॉब ऑफ द रेडियो, जो यहाँ पे होता है मुख्तलिफ स्टेशंस को कैच करने के लिए। जब इसको हम ट्यून करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो बेसिकली वी आर चेंजिंग कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन द सर्किट। और चूंकि ओमेगा नॉट इक्वल्स 1/√LC, तो जब हम कैपेसिटेंस को चेंज करते हैं तो इट चेंजेस द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द LCR सर्किट। So as capacitance changes, the natural frequency also changes. और जो रेडियो स्टेशन है that sends out signals at a particular frequency, तो उस frequency को हम कहेंगे ड्राइव frequency। और जब हम कैपेसिटेंस इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, चेंज करेंगे, तो एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस दिस ओमेगा डी विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट। So when the natural frequency matches the resonant frequency of the radio station, so resonance will occur and the amplitude will attain maximum value. And we know that intensity means the intensity of sound, it is directly proportional to amplitude ka square. So when amplitude attains maximum value, the intensity will also attain maximum value for that particular frequency, and as a result we will be able to hear the signal broadcasted by the radio station. एक और एप्लीकेशन है ट्यून्ड मास डैम्पर, इसको हम शॉर्ट में TMD कहते हैं। A tuned mass damper, it is also known as a harmonic absorber or seismic damper. It's a device जिसको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में यूज किया जाता है, और इसका काम क्या है? To reduce the amplitude of mechanical vibrations. तो इसका काम ये है कि रेजोनेंस ना हो। It acts as a damping force. तो TAPI 101, it is the largest tuned mass damper in the world. It is a sphere 5.5 meter in diameter, और इसका mass है 660 tons, and it is suspended from 92nd floor to 87th floor out of 101 floors. So here is its location. It is suspended from 92nd floor to 87th floor. तो इसका काम क्या है कि जब ज़लज़ले आते हैं, earthquake, the building will start to oscillate. तो जब बिल्डिंग का टॉप ऑसुलेट करेगा टू द राइट एक्सट्रीम, ये जो मैसिव स्फीयर है, चूंकि ये रिजिडली अटैच नहीं होता है, ये सस्पेंडेड होता है, तो इट विल ऑसुलेट टू द लेफ्ट. सो इट विल अप्लाई अ डैम्पिंग फोर्स ऑन द बिल्डिंग. तो बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक ये बिल्डिंग ज्यादा ऑसुलेट करने लगती टू द राइट साइड. तो बिकॉज ऑफ दिस ट्यून्ड मास डैम्पर ऑसुलेशन डिक्रीजेस. और जब यही बिल्डिंग फिर ऑसुलेट करके लेफ्ट साइड में जाती है, तो ये जो ट्यून्ड मास डैम्पर है, इट गोज टू द राइट साइड. तो इससे क्या होता है कि रेजोनेंस की वजह से जो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता, ये उस एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करता है. तो कॉन्सिक्वेंटली बिल्डिंग गिरने से बच जाती है.